नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं लेके आया हूं अगला वीडियो जो है स्विट्ज़रलैंड के ग्लास फैक्ट्री के बारे में। उसका नाम है हेरिगिसविल ग्लासी, जो एक ग्लास का फैक्ट्री है और ये लोकेटेड है एक नीदवाल्डेन बोल के एक यहाँ पे स्टेट होता है या कैंटन बोलते हैं यहाँ पे, जिसके नज़दीक है। और इसका लोकेशन जो है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये एक फेमस माउंटेन और एक फेमस लेक के बीचों बीच है। जो फेमस माउंटेन है उसका नाम है माउंट पिलाटस, जो बहुत सारे टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस अट्रैक्शन होता है। और लेक जो है उसको बोलते हैं लेक लुत्सर्न, जो फिर से और एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट। तो ये ग्लास फैक्ट्री का टूर थोड़ा बड़ा था, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज का जो पार्ट है उसमें हम जाएंगे फैक्ट्री पे और वहाँ पे एक जो म्यूज़ियम है, फेमस म्यूज़ियम, वो देखेंगे। और बाद में दूसरे पार्ट में फिर आगे जाएंगे और दूसरे अट्रैक्शन को देखेंगे। और लास्ट पार्ट में हम लोग फैक्ट्री के बाहर मोस्टली जो जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं हेरिगिसविल ग्लासी, लेट्स गो। अभी सुबह का 8 बजा है और हम लोग हाईवे में ऑलरेडी है और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए बस 5 मिनट के लिए रुके थे। और जैसे आप देख सकते हो, आप कहीं पे भी जाओ, दुनिया भर का टेस्ला का चार्जिंग स्टेशन रहता है कहीं पे भी, और स्विट्ज़रलैंड इज़ नो एक्सेप्शन। और अभी रुकेंगे सीधा डेस्टिनेशन पे। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये लेक लुत्सर्न है और यहाँ से ये एक तरफ है फैक्ट्री का और दूसरे तरफ माउंट पिलाटस है, जो अभी दिख नहीं रहा है, बाद में दिखेंगे। माउंट पिलाटस जो है वो पार्ट 3 में आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, क्योंकि तब हम बाहर ही रहेंगे, हम म्यूज़ियम से बाहर आ जाएंगे। और अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता टिकट काउंटर की तरफ जाएंगे, क्योंकि टिकट ख़रीदना है, पहले से नहीं ख़रीदा है। और वहाँ से फिर आगे म्यूज़ियम की तरफ। Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but 1 subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking. ये दोस्तों ऑनेस्टली हम लोग गलत तरफ पे आ गए थे। ये टिकट काउंटर नहीं है, ये एग्ज़िट है। और लेफ़्ट साइड पे आपको जहाँ पे दिखेगा वो है लेबिरिंथ, जिसको भूल-भुलैया भी बोलते हैं। और वहाँ पे एक ग्लास का पूरा लेबिरिंथ है जो हमने कवर नहीं किया। हमको म्यूज़ियम की तरफ जाना था। अभी हम लोग सही दिशा पे आए हैं। वो जो गेट दिख रहा है लाल कलर की, वहाँ पे जाना है हमको। टिकट काउंटर है वहाँ पे और म्यूज़ियम भी है। तो चलिए चलते हैं। Ich habe jetzt zweimal gesagt, kommen Sie zu mir. Ich habe die Glaskugeln draussen mit Barren. Weißt du, wenn ich
अभी हमको घूम के लेबरिंथ के तरफ ही आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे दूसरी तरफ कार्ड नहीं चलता है और यहाँ पे कार्ड के लिए आए हैं। तो फाइनली हम लोग म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। वैसे आपको बता दूं म्यूज़ियम के अंदर 4 भाषाएं चलती है, एक जर्मन, एक फ्रेंच, एक इटालियन और इंग्लिश। तो हम लोगों ने इंग्लिश ही चूज़ किया क्योंकि हम उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। वैसे आपको पहले ही बता दूं ये बाकी का जो कंटेंट है ये म्यूज़ियम का टूर है, और अगर आपको म्यूज़ियम में इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो और पार्ट 2 में जा सकते हो। पर आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप कंटिन्यू कीजिए म्यूज़ियम में, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है म्यूज़ियम के अंदर। The goblet of Pharaoh Thutmose III was molded 3,500 years ago. It is the oldest known. The ancient Roman Empire, a state with a central administration and well-developed lines of communication with economic progress in mind. There was a rich upper class, eager for beautiful objects to display on ceremonial occasions. Around 200 BC, Syrian artisans invented the glass-blowing pipe. From then on, glass was blown, a technological revolution. New shapes appeared. The Roman emperors were keen buyers. Venice, the island state, the major commercial power of the Renaissance. It was 700 years ago that glass was blown for the first time on the lagoon island of Murano. The artists of Murano strove to perfect glass and make it like crystal. They developed glass of the greatest purity and played with colors and shapes never seen before. The citizens of Venice were wealthy enough to be able to afford these luxury goods. The glassmakers achieved riches, power, and noble rank, and they jealously guarded the secrets of fine glassmaking. Giving away the secrets of the glassworks was punishable by death, but up to 8,000 people worked in Venice's glassworks, and not all of them were craftsmen with a long tradition of glassmaking. The fleur-lit glass they produced was solid, durable, everyday wear. Merchants traveled the land selling it. The furnaces of the forest glassmakers actually consumed whole forests of beech and oak. When supplies of wood ran out, the glassmakers moved on to the next valley. For 80 years, all went well. Then the inhabitants of the Entlebuch turned against the stewards and the glassmakers had to look for new sites. Forested land at the foot of the Pilatus and the lake for transporting goods from the thickly wooded cantons of central Switzerland, and room for a new furnace and a new glass-making village. One branch of the Ziegwarts from the Entlebuch, together with wealthy glassmakers, bought land in Hergiswil am See. A glass steward had turned into an overlord. He lived in the directors' and the workers' village, in the bourgeois comforts of the 19th century. The hierarchy was firmly established. Lola Ziegwart had become the new director. Preserving jars, cider bottles, drinking glasses, and glass for lamps were now being mass-produced. The work was hard and the wages low. 500 people worked at the furnace. What was good for the glassworks was also good for Hergiswil. The factory had become the most important local enterprise. Dust, dirt, heat. On payday, the workers found applause and a little money. But then, all of them, high and low, moved close together.
Switzerland was thrown back on its own resources. Emergency rations. Preserving jars, mass production, the conveyor belt, the glassmakers had become slaves of the machine. And then, time stood still in the glassworks. After the war, the days of fully automated production dawned abroad. Glass from advanced high-output factories flooded the market. The glassworks bought their first fully automatic machine in 1961. Too late. In 1963, the era of Ziegfeld glassmaking came to an end after 240 years of Ziegfeld glass in Switzerland. The firm was sold. It was beyond rescue. It was heavily in debt, antiquated, and lacking any ideas for the future. In 1972, the glassworks in Küsnacht closed down, and 3 years later, the factory was demolished. In 1975, Hergiswil too was at the end of its tether. Shortly before his death, Roberto Niedre described how he happened to learn that the glassworks in Hergiswil were to be shut down. One of the glassworkers said to him, "Niedre, if you wanted, we would have work." When the glassworks were in crisis, Roberto Niedre got busy. He designed a new range of products. He won over many people to the merits of Hergiswil glass and sparked off a wave of solidarity for the glassworks. Roberto Niedre was born in Naples on the 29th of February, 1928. It was in Zurich that he learnt the respected trade of glassblower. Then he began to elaborate on giving shapes. Craftsmanship. It was the way to a successful future. In 1987, Roberto Niedre retired to his native Calabria. The glassworks passed into the hands of his son, Robert. A year later, on the 1st of December 1988, Roberto Niedre died. In accordance with his last wishes, his children scattered his ashes over the Ionian Sea. A year before his death, my father handed the glassworks over to me. Today, the glassworks employ about 100 people, of whom over 40 work at the furnace. They come from all over Europe. We have also trained apprentices. Thanks to an outstanding collaboration, we have succeeded in continuing Roberto's ideas and work, and at the same time giving our visitors a clearer insight into this fascinating handicraft. तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।